Hello students, how are you? In this video, I will discuss the next portion of the solution, that is your Raoult's law. And before I have on my before videos, I have discussed the Henry's law basic concept and the numericals regarding that. And in this video, we are going to discuss about Raoult's law. Okay, and the solution chapter is consisting of some major headings like Henry's law, Raoult's law, colligative property, ideal and non-ideal solution, and abnormal molar mass. So all the things like these laws are very similar. They are very related to each other, and there is a very fine difference. There is a very fine difference. Okay, everywhere is partial pressure is used, mole fraction is used, and your molarity, normality is used everywhere. So for this chapter especially, you have a clear cut idea, you should have a clear cut idea then when you need to apply the Henry's law, when you need to apply the Raoult's law, and which case you need to apply the colligative properties. Okay, so basically for Raoult's law, Henry's law, and colligative property, basically I suggest students you should have a clear cut idea about their principle. It is okay, they are related with their partial pressure and mole fraction, all the theories are a little bit similar. Okay, therefore you need to focus the minute thing, that is differentiating between the Henry laws and Raoult's law with the colligative property. So here I have tried to make it very distinctive from Henry's law and colligative property, and I have discussed all the thorough concept of this. And in my next video I will come with some of the numericals that is very important with respect to this concept. Okay, so we will start Raoult's law. And in the very beginning, I just want to let you know that whenever this word strikes to your mind, if you listen Raoult's law, then what should be the things, what things should be come into your mind? That is important. Whenever you are just listening Raoult's law, तो आपके mind में क्या आना चाहिए? That is important. I have made a list. Look at it. So द जैसे ही राउल्ट्स लॉ सुनते हैं तो आपके माइंड में फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन. फॉर विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन द राउल्ट्स लॉ इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम दो तरीके के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ में मैं क्लियर कट आपको बता चुकी हूँ कि हेनरीज लॉ में हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जहां पे कि आपका सॉल्यूट गैस होता है. ठीक है, लेकिन जब हम राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है. जो सॉल्यूशन होता है दैट कैन बी टू टाइप्स. बोथ आर लिक्विड सॉल्यूशन, बट in one type the solute must be a solid, the solute is a solid, and in the second case the solute must be a liquid. Raoult's law can be applicable for both this type of liquid solution. ठीक है, and in this case solvent is always a liquid. Solvent is always a liquid in case of Raoult's law. Okay, फॉर सो जब भी आप राउल्ट्स लॉ के बारे में सुनते हैं या समझते हैं तो आपके दिमाग में ये एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्यूट आर सॉलिड एंड लिक्विड and the solvent is liquid. Okay, fine. And the next thing, after the type of solution, the next very thing that comes into your mind is your vapor pressure. What is vapor pressure? Because the Raoult's law is all about correlation of vapor pressure and mole fraction. Okay, so you should understand, you should know what is vapor pressure. Suppose there is a liquid. Now try to understand what is vapor pressure. Suppose there is a liquid. This is a container. Okay, and here there is a liquid, and suppose this is a liquid. If the liquid is volatile, मतलब at a particular temperature, if it is evaporating, अगर ये evaporate हो रहा है, ठीक है, if the liquid is evaporating, तो इसके surface के ऊपर इसके particles evaporate होंगे. जिस तरह से ये evaporate होते हैं उसी तरह से ये वापस solution में condense होके जाते हैं. तो
So there is a thermodynamic equilibrium at a particular temperature. There is a thermodynamic equilibrium we establish, and at that particular equilibrium, when this molecule of this liquid will evaporate, vapor form में आते हैं, so they will exert a pressure. They will exert a pressure, and if because this solution is in the pure form, it is not a mixture. It is in the pure form. It has its own pressure, and the pressure created by its own vapor, the pressure created by its own vapor is called your vapor pressure. It is called vapor pressure. Okay, fine. The vapor pressure, what is vapor pressure? For a volatile liquid, the evaporated molecules of the liquid exert a pressure over the surface, and the pressure is called vapor pressure. Okay. एंड व्हेन दिस वेपर प्रेशर इज ग्रेटर, जिसका जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होता है उसका उतना ज्यादा दैट सैंपल इज वोलेटाइल. ठीक है, जिसका जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होता है वो उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा. मान लो दो सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर एंड इथेनॉल. वाटर एंड इथेनॉल, वाटर और इथेनॉल के केस में इथेनॉल अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल. अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल. सपोज दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज वाटर. So in the water के case में it is less volatile, and in alcohol it is more volatile. That means what? The partial pressure, the vapor pressure in case of alcohol is more than the vapor pressure of water. ठीक है, because alcohol is more volatile than water, so the partial pressure exerted by this water molecule are higher than alcohol molecule are higher than the water molecule. ठीक है, तो जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा उसकी जो वोलेटिलिटी होगी उसका सबसे वोलेटिलिटी ज्यादा होगा. जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका उतना वेपर प्रेशर हाई होगा. ओके, ठीक है. The next thing that should be come into mind when you are talking about Raoult's law is your mole fraction, because Raoult's law is basically a quantitative correlation. It establishes a quantitative correlation between your vapor pressure and mole fraction. आपको पता है mole fraction क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी solution बनता है, it is made up of two component, A and B. ठीक है, it is made up of two component. If it is made up of two component, then they are present in some amount. ठीक है, if they are present in some amount, you can calculate the number of moles of A and number of moles of B. Okay, so mole fraction of A will be defined is it is the number of moles of A out of number of moles of A plus number of moles of B. This is the mole fraction of component A. Similarly, the mole fraction of component B will be number of moles of B and the total number of moles of both the component. Okay, so this is a mole fraction of A and mole fraction of B. So basically, what is the concept? The mole fraction of both the component, जितने भी component होंगे आपके solution में, उनका जो mole fraction का summation होगा, that should be equal to 1. Okay, so basically whenever we are talking about Raoult's law, these three things should be clear in your mind, that it is dealing with the vapor pressure, it is also dealing with the mole fraction, and it is based on two different type of solution. One is both are liquid solution, but in one case it is your solid, the solute is solid, and in the other case the solute is your liquid. Okay, one by one I will discuss with you the Raoult's law when the solute is a solid, and about the same law when the solute is a liquid. Okay, so we start with the first one when the solute is a solid. So here we can see here you can see, suppose this is a liquid and this is a volatile liquid. Suppose this is a liquid and it is volatile. This is a volatile liquid. So what do you mean by volatile liquid? Volatile liquid means these particles will evaporate and they will exert a pressure. And if the volatile liquid is pure, if this is pure solvent, then this, due to the exertion of pressure of this vaporized molecule, it will create a partial pressure, and this partial pressure is suppose P0. Suppose the partial pressure is P0.
of the pure solvent. This is the partial pressure of the pure solvent. Suppose I add a non-volatile solid over here. एक non-volatile solid अगर मैं यहाँ add करती हूँ, then what will happen? See, जब आपका solid liquid volatile होता है, तो generally the molecules present in the surface of the liquid, surface पे जो molecules होते हैं, generally they start evaporating, and उनकी वजह से the vapor pressure arises. उनकी वजह से vapor pressure arise होता है. लेकिन जब आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड, देन सम ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉलिड, जैसे ये पार्टिकल्स ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपके, सपोज ये नॉन वोलाटाइल है, दे विल ऑक्यूपाई सम ऑफ द सरफेस ऑफ द वोलाटाइल लिक्विड. ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड का कुछ सरफेस वो ऑक्यूपाई कर लेंगे ड्यू टू डिसोल्यूशन. एंड सपोज अगर इन्होंने सरफेस के पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ओवर दिस सरफेस विल डिक्रीज. किसका? जो वोलाटाइल लिक्विड है, जो आपका वोलाटाइल लिक्विड है, उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे सरफेस पे, दे विल डिक्रीज. अगर उनके सरफेस पे नंबर डिक्रीज होगा, तो उनका एवापोरेटिंग रेट ऑल्सो डिक्रीज. उनका एवापोरेशन का रेट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. एंड देयरफॉर जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट आफ्टर सोल्यूशन, इसका जो प्योर सॉल्वेंट था, अगर वो P0 है एंड P is the final vapor pressure of the solution after the solid is dissolved in it. अगर ये solution है, then the P0 is always greater than P, always greater than P, because the partial pressure will decrease. The partial pressure will decrease, and this decrease in the partial pressure is dependent on the mole fraction. It is the mole fraction of the solute here. ठीक है, mole fraction of the solute. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? यहाँ पे अगर हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो यू कैन सी द राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द एनी ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होगा, सपोज जैसे कि सोल्यूशन आफ्टर मेकिंग द सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर P है, यहाँ पे किसका? जो ओरिजिनल सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, उसका अगर पार्शियल प्रेशर P है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, its mole fraction in the solution. ठीक है, and this is your Raoult's law if solid is dissolved in a liquid. And you can say if the proportionality constant को अगर आप हटाओगे, तो यहाँ पे P is equal to P0 into X. That means your partial pressure of the solvent in the solution, this is the partial pressure of the solvent in the solution, is directly proportional to its mole fraction, and this is the constant. This is a constant, proportionality constant, and it is the partial pressure at the pure form. जब वो solvent pure form में था, तो उसका जो partial pressure है वो ये है. ठीक है, तो जब भी आप कोई volatile liquid में solid add करते हैं, तो evaporation का rate डिक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस ऑक्यूपाई हो जाते हैं सॉलिड से, एंड देयरफॉर जो पार्शियल प्रेशर में डिक्रीज होता है, दैट डिक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मोल फ्रैक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होगा. एंड फाइनली द राउल्ट्स लॉ कम्स आउट टू बी क्या है, कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट in the solution is equal to its partial pressure in the pure form into its mole fraction in the solution. ठीक है, यहाँ पे P क्या है? P is the pressure in solution. It is the partial pressure in solution. P0 क्या है? It is the partial pressure in pure form. ठीक है, और it is क्या है? X क्या है? It is the mole fraction. It is its mole fraction, the same component का mole fraction in the solution. So in this way you can understand the Raoult's law in a liquid solution. The another option is that whenever is liquid solution is made, what happens when liquid solution is prepared? Let us discuss the Raoult's law in liquid solution. Suppose in liquid solution what happens? Let's see.
Suppose there is a volatile liquid. Try to understand, there is a volatile liquid. Suppose in this container there is a volatile liquid and it is in the pure form. Okay, suppose this component is A and there is another component is called B. Okay, another component is B and both are volatile liquids. Both are volatile liquids. Okay. Okay, so in the pure form, due to the evaporation of these particles, it will exert a pressure and it has a separate partial pressure. So the pressure in the pure state, let its partial pressure is a component A ka PA0, and similarly in the pure state, let the partial pressure of B is PB0. Okay, PA0 and PB0. PA0 and PB0 are what? It is the partial pressure of the it is the vapor pressure. It is the vapor pressure of component A and component B in the pure form. Pure form में उनका vapor pressure है. ठीक है. Now let me mix this two solvent. इसको अब अगर मैंने mix कर दिया, then it will form a new solution. It will form a new solution. Suppose मैंने इसका color मैं यहाँ पे change कर देती हूँ so that you can understand कि there are two different type of solvent. ठीक है, दो different type of solvent है. And let me clear one thing. Suppose this PA0 is greater than PB0. Suppose the vapor pressure of PA0, that is the vapor pressure of the pure component A, is greater than the pure component of B. Suppose I mix this two solvent, then what will happen? Both the type of particles of the solvent will present in the solution. ठीक है, solution will present and they will exert, both the component will exert their own partial pressure. They will exert their own partial pressure because all the type of atoms that are present in your solution will evaporate and they will cause a partial pressure. They will develop a partial pressure. Suppose the partial pressure here due to this a kind of solvent is Pa. This is the partial pressure of component. This is the partial pressure of component A in solution. And this is the red one is the partial pressure. They will exert the partial pressure of B. This is the partial pressure of component B. Component B in solution. It is the partial pressure of the component B in the solution. Then the total pressure of this solution. What will be the total pressure? The total pressure is equal to the partial pressure of A component in the solution and the partial pressure of B component in the solution. And this is according to the Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure के according, अगर more than one component are added to make a solution और उस दोनों कंपोनेंट का अपना अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है, तो द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट. ओके, ईच कंपोनेंट. नाउ जैसे लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि पार्शियल प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या होता है, आपको पता है राउल्ट लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है? सी, राउल्ट लॉ क्या स्टेट करता है? किसी भी सॉल्यूशन में अगर दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल्स हैं, then the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. That means here there are two components A and B and each component has their own partial pressure. So Raoult's law के हिसाब से each partial pressure is equal to or directly proportional to its mole fraction. So PA will be proportional to mole fraction of A and PB will be proportional to mole fraction of B. So according to Raoult's law written here, I can write down PA, that is partial pressure of the component A in the solution, is equal to PA0 into XA, that is the mole fraction of A, and similarly the partial pressure of B is equal to PB0, that is the partial pressure in the pure state, into XB, that is the mole fraction of the B in solution. So according to the statement here written,
the statement जो है उसके हिसाब से we can write PA is equal to, this is the partial pressure at the pure state and it is the mole fraction, it is the mole fraction of A and it is the mole fraction of B, where in the solution, in the solution. ठीक है, okay, so we can write it. So what will be the total pressure? What will be the total pressure? The total pressure will be, we can write the total pressure of the solution, total pressure of the solution, what will happen? It is P total is equal to the partial pressure of A plus partial pressure of B. This is according to your Dalton's law of partial pressure. So I can put the value of PA here, that is PA0 into XA, that is mole fraction of A, and PB0 into mole fraction of B, and this is equal to your total pressure. As before I have explained you, XA plus XB should be 1, this should be 1, so I can write down XA is equal to 1 minus XB. I can write down this one. So in place of XA, I can write down 1 minus XB. So put the value of this thing. So total pressure is equal to PA0 into 1 minus XB plus PB0 into XB. So if you expand it, PT is equal to PA0 minus PA0 into XB plus PB0 into XB. If you take common PB, if you PB को common ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PA0 plus PB0 minus PA0 is multiplied by XB. So this is your final equation. This is your final equation. Okay. So this is your final equation and this represents the total pressure of the solution. इस equation को देख के आपको क्या conclude हो रहा है? What you are concluding? The total pressure is dependent. It is dependent on the mole fraction of any of one component. Here we can see the total vapor pressure of the solution is related to the mole fraction of any one of the component. किसी एक component के, suppose मैंने यहाँ पे XA के को convert कर दिया 1 minus XB में. Similarly, I can do XB is equal to 1 minus XA. In that case, the final equation will contain XA. ठीक है, XA कंटेन करेगा. इसका मतलब क्या है? तो आपका जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, इट इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, चाहे वो A हो या चाहे B हो. एंड the next conclusion that you can derive from this is the total vapor pressure over the solution. जो total vapor pressure है इसका, that is related to the mole fraction linearly. It is related to the mole fraction linearly because इस equation से you can see, इस equation से आप दे सकते हैं कि this equation can be correlated to y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. This is constant, this is constant, this is variable and this is also constant. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको y is equal to mx plus c से जैसे, this is a linear equation. ठीक है, this is a linear equation. So the mole fraction and the partial pressure are linearly related with each other. So अगर हम इसको graphically represent करेंगे, so what will be the representation? Let's see it graphically. अगर हम इसको ग्राफिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, then you can find the graph like this. Suppose here, this is the, I told you earlier, that is the partial pressure of A in the pure form is greater than partial pressure of B in the प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे जो लाइन शो हो रहा है, ये वाला लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग A component. So in this line, the whole mole fraction is 1 and
A का मोल फ्रैक्शन 1 है and in this position the mole fraction of B is 0 in the starting before mixing the before making the solution. स्टार्टिंग में क्या था, आपके दो सॉल्वेंट थे, है ना, दो सॉल्वेंट है, एक था A कंपोनेंट और दूसरा था B कंपोनेंट, ठीक है। तो A कंपोनेंट का पार्शियल अपना प्रेशर था, वेपर प्रेशर PA 0 एंड इसका वेपर प्रेशर क्या था, PV 0, और यहाँ पे द मोल फ्रैक्शन इज ओनली 1 and इस केस में यहाँ पे when it is pure the mole fraction is 0 because no B is present here. In case of B your mole fraction is 1 XB and XA is 0 because there is no A component, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो X's हैं they are representing A and B, A and B, and because I have told you कि PA 0 is greater than PB 0 तो यहाँ पे मैंने इसको higher दिखाया है and इसको lower दिखाया है। देन अकॉर्डिंगली जैसे ही आप मिक्स करने लगोगे तो A का मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज एंड द मोल फ्रैक्शन विल इंक्रीज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन विल इंक्रीज। तो जो भी आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर था, जो आपका वेपर प्रेशर था PA0, जैसे ही इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होने लगेगा, जैसे इसका मोल फ्रैक्शन इधर डिक्रीज होने लगेगा, देन इसका पार्शियल प्रेशर विल आल्सो स्टार्टेड डिक्रीजिंग। राउल्स लॉ क्या कहता है, व्हाट राउल्स लॉ कहते हैं partial pressure in a solution is directly proportional to its mole fraction and its pressure in प्योर स्टेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है देन प्रेशर विल बी पार्शियल प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज। अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका मोल पार्शियल प्रेशर सबसे हाई था, प्योरेस्ट फॉर्म में था, जहां पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द A इज 1 एंड B इज 0, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिक्रीजेस starts decreasing and the mole fraction of B starts increasing, वैसे वैसे आपका जो partial pressure of A will decrease. Similarly, this point is your vapor pressure of B in the pure form. It is in vapor pressure of B in the pure form, and here in this point the mole fraction of B is 1 and the mole fraction of A is 0. Mole fraction A is 0, so the vapor pressure is in the pure form, it is the highest value. And when you start mixing and the preparing solution, जब आप solution prepare करना start करते हैं, then you start decreasing the mole fraction of B. मोल फ्रैक्शन का जब जैसे ही वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, इट्स PV वैल्यू आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, इसका पार्शियल प्रेशर आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट विल टेल यू दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A plus mole fraction of B is equal to 1. At this point the mole fraction of A and mole fraction of B will equal to 1, ठीक है। और इसका जो फाइनल प्रेशर जो होता है, द फाइनल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय PA plus PB एंड दिस होल ग्राफ डिपेंड ऑन दिस, ये ग्राफ देखो डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एनी वन। अगर आप किसी एक ही ग्राफ को लेके चलते हैं, सपोज हम XA वाले को लेके चलते हैं, तो XA वाले में when XA is higher the final solution का प्रेशर हाई था, जब वो लो हुआ तो फाइनल प्रेशर लो होगा, जब वो और लो होगा तो फाइनल प्रेशर और लो होगा, लेकिन वो तब तक लो होगा जब तक कि आपका PV वैल्यू है, PV वैल्यू तक ही ये जो टोटल प्रेशर है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एनी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट। इसके बाद वो डिक्रीज नहीं हो सकता बिकॉज इट विल बी, इसका जो मिनिमम पार्शियल प्रेशर है उससे नीचे वो नहीं जा सकता, टोटल प्रेशर जो नहीं जा सकता। टोटल प्रेशर कहाँ वेरी हो सकता है, इट कैन वेरी बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू, मतलब दोनों के प्योर फॉर्म में जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है उसी के अंदर ही ये इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द component, ठीक है। Okay, so this way you can represent the Raoult's law, and basically Raoult's law is talking about the quantitative relationship between the partial pressure and mole fraction of each component, and partial pressure of the solution, the final solution जो होगा उसका partial pressure can be increase or decrease according to the
mole fraction of the component, ठीक है. And by this use of Raoult's law, there are various numericals are there that can be asked for you in the MCQs questions. In my next video I will come with some important questions from Raoult's law. Okay. और यहाँ पे अगर आपको समझ में आया होगा या नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो आप प्लीज मुझे आइडेंटिफाई करिए. आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट. और आई होप कि मुझे राउल्ट्स लॉ आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि वो होता क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है. ठीक है. कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होगा जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगी आपको. एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्जाम्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.